significant disruption in resident particular in several areas with Greater Hyderabad, sir. IT Minister Saab is here, sir. Recently we had in Gachibowli, High-Tech City also there was a power shutdown, and you know all the big offices asked their employees to leave the office and go back home. And I mean ये मसला है, power cut हो रहा है sir. Sir, Greater Hyderabad में भी हो रहा है sir, Gachibowli, Ibrahim Bagh sir. And Greater Hyderabad consumes 75.80 million units of electricity daily, sir. More than half of that demand coming from Cyber City, Medchal, Habshigoda area, marking a 35% increase over last year, sir. In 2024, Cyber City Circle saw its highest electricity demand of 714 megawatt. In official projecting the demand will rise to 850-900 megawatts in the coming month of April and May, sir. Sir, ये होने के बाद भी क्यों हो रहा है? And sir, I have earlier also requested and asked some few clarifications, sir. And again, I'm asking this, sir. The power sector experts are expressing concern that DISCOM are buying more power than required, and as a result, they are having abnormal surplus power, sir. Is this right or wrong? I want an answer. They never give an answer, sir. You know, I used to always say, sir, TRS के दौर में भी, sir, पावर शॉपिंग हो रही थी सर, पावर परचेज शॉपिंग, पावर परचेज. तो पावर परचेज शॉपिंग is still continuing with the Congress regime also, sir. Along with the power sector with the experts, several objections have been raised on the annual revenue requirement ARR filed by the DISCOM in Telangana Electricity Regulatory Council for the financial year 25 and 26, sir. That sir, 95,127 million units of electricity is supposed to be required for the financial year of 25 and 26 within the scope of two DISCOMs, North and South, sir. These are not my figures, sir. Sir, according to ARR, the DISCOM have 1,23,631 million units of electricity, sir. जब आपका requirement 95,127 है, तो फिर आप ये 1,23,631 million units of electricity क्यों लिए, sir? There is no answer, sir. Sir, it was explained that having 30%, 28,504 million units more electricity than required, DISCOM is not at all, I mean, it's having 30% extra, sir, and it is not at all acceptable, sir. And 5% surplus, agar 5%, sir, if it is 5% surplus, it is acceptable. 30%, sir, 30%, sir. And these are not my figures, sir. ये इनके figures है, अब जो books दिए उसमें आया, sir. 95,127 million बोल रहे हैं, sir, requirement. और वो आपके पास है कितना? 1,23,000. Now the question arises is that, कि why are we having power cuts? फिर जब आप you are having so much of power, तो मैं यही कह रहा हूं, sir, परचेज ये भी करते रहे, ये भी कंटिन्यू कर रहे हैं, चलो शायद इसमें बहुत बड़ा फायदा है पावर परचेज में, शायद हो सकता है, रॉन्ग सर, हो सकता है, बट आई थिंक एवरीबडी नोस के बहुत पावर परचेज में बहुत पैसा है. So depending on the changes in demand, the DISCOM have to make power purchase agreement PPM. Sir, experts have also expressed concern that the losses of DISCOM are and dues from the various government departments, sir. When I was going through the details, sir, by the end of the financial year 23-24, the losses of Southern DISCOM were 47,239 crores, and the losses of Northern DISCOM were 20,003 crores, sir. And sir, the areas of two DISCOMs from the various government department of 30th September is 30,777. Sir, Northern and Southern दोनों का हम ले लेते हैं, sir. 47,000 and again total is 47,000 or 20,000 हम ले लेते हैं, sir. फिर now the due from the government departments is 30,000. Why are you not paying that dues? Sir, I am sorry to say, sir, I wanted to elaborate more, but what wrongdoings had been done by the BRS is continued by the Congress. So where is the change, sir? There's no change, sir, in the policy, sir. Sir, experts have also stated that DISCOM has not made any mention in ARR about the purchase of 1,000 megawatt of electricity from Marwa project in Chhattisgarh. However, the electricity dues
dispute, Discom replied that they are not having electricity from Chhattisgarh. I mean, it is not very clear, sir. Sir, about ओल्ड सिटी, सर ओल्ड सिटी में बोलते हैं बार बार के नहीं, यहाँ पे लॉसेस है सर, ये पावर परचेस के लॉसेस, गवर्नमेंट के लॉसेस, और एंड सर आई वुड हैव स्पोकन मोर सर. सर आप इतना पावर परचेस कर रहे हैं ना सर, व्हाट आर द रेट्स सर? वी हैव डिफरेंट रेट्स सर. Nobody is questioning those rates. Nobody is seeing those rates. And in fact, the rates which were there in BRS time have been enhanced, and moreover it is continuing, sir. चल रहा है आगे बढ़कर. Sir, and you talk about, losses of old city में loss. There is no losses in old city, sir. Sir, I have demanded that we need some substations in old city, sir. 33 by 11 kV substations and new transformers are required in old city, sir. 70 square millimeter bunch cable for LT distribution network, approximately 100 kilometers required in this net immediately, sir. And creation of more number of sections in old city, as each section is having an average of 60,000 service presently, sir. As per norms, each AE should have only, now you see, sir, each AE should have only 12,000 to 15,000 services. And sir, we are expecting to do a duty of 4 AEs by 1 AE only according to staff. Sir, staff also needs to be increased, sir. Old city में देखिए आप sir, ऐसा नहीं है sir. Sir, old city there is a lot of trees. Earlier 11 kV AB air bunches cable of sizes 185 square meters were laid, very substandard and poor quality, and all the AB cables are damaged, and multiple joints in old city need to be replaced, sir. The concept of laying underground cable at the present government is invited and is accepted, but the underground cabling work starts with 33 kV cable and even 11 kV cable at the first instance. So this will help strengthening 33 kV and 11 kV network, sir. So there is an urgent need of 5 acres of land for EHT, Extreme High Tension 132 kV substation in Ibrahimbag division that falls under the Hyderabad parliamentary constituency. There is an abnormal load growth, residential towers, commercial complexes in the area. Hence 5 acres of land is urgently needed in this area through Rangareddy district collector, sir. I hope that the government will make a note and provide 5 acres of land, sir. Sir, also, sir, there is no stock in the store, sir, for cables and other items, sir. New transformers, enhancements capacity is required, sir. That is also not been addressed, sir. And also, sir, in this, going further ahead, sir, the Energy Minister Saab says that a Telangana peak demand reaches 16,918 megawatts with a record consumption of 329 million units on 3rd of March this year. The Telangana government has allocated 11,500 crores in subsidies to power generated companies, sir. Sir, and also, sir, I may point out that Deputy Chief Minister Saab, who holds a finance and energy portfolio, says the budget speech that an allocation of rupees 21,221 crores is made for energy department in the next year's budget, but he has moved the demand for grant amounting to rupees 16,075 crores now. Sir, I want to know the reason for the difference in these two figures, sir. I always scream and shout about these figures, sir. No figure is tallying, sir. Sir, also, sir, there are many things, sir, but I'm really cutting short, sir. Going to the next subject, sir. Hi, sir. Sir, there are Governor, Council of Minister, and General Administration, sir. These two important demands, number 2 and 4, account for budgetary allocation of only rupees 478 crores in the budget for 2025-26, sir. However, the General Administration Department has many important commission and organization under its purview, sir. These include the State Public Debt Service Commission, Official Language Commission, State Human Rights Commission, Telangana Vigilance Commission, Lok Ayukta and Upalok Ayukta, Administrative Tribunal for Disciplinary Proceeding, Anti-Corruption Bureau, Vigilance and Enforcement Department, and Dr. MCR HRD Institute, etc., sir. Sir, however, some of these commissions and organizations are non-functional in the absence of the chairman, members and other officials, sir. Sir, मैं बार बार एक ही बात मुसलसल करता आ रहा हूं, sir.
as per the provisions of the Act, the commission consists of chairman and 4 members. Sir, इसमें I'm talking about this Telangana Official Language Commission is set up under the provision of Telangana Official Language Act, sir. Sir, इसमें मैं बार-बार कह रहा हूं सर, ये तेलंगाना ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू बोलने वाले को भी रखिए सर. The reason why, sir, on the demand of Majlis Ittihadul Muslimin and myself, sir, the Telangana government has, then KCR Saab had declared Urdu as a second official language of the state, sir. जब आप उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौखफ दे दिए हैं, तो आप ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में एक उर्दू बोलने वाले को भी रखिए सर, जो हम मुसलसल डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उस पर आज तक भी तवज्जो नहीं हुई सर. तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन also has been constituted after the Congress assumed the office. I request the government to ensure that 4% reservation for socially and educationally backward BCE category are implemented in all recruitments, sir. When I say about recruitment, sir, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं सर कि आप कई लोगों के टेम्पररी और जो दूसरे सर्विसेज थे उसको रेगुलराइज कर रहे हैं, तो वो 4% रिजर्वेशन मुसलमान को उसमें नहीं है और उससे महरूम हो रहे हैं सर. सर ऑल्सो सर, we have also always been requesting for one demand, sir, option to write recruitment test in Urdu, sir. सर उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौखफ दिए गए हैं. जब दिया गया है तो जितने भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जो इश्यूज है, कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द एश्योरेंस दैट all the recruitment tests of public service commission, state level police recruitment boards and various department जितने भी होंगे सर, चाहे इसमें कोई दूसरे भी डिपार्टमेंट्स हो, उर्दू में इम्तिहान लिखने की सहूलत देनी चाहिए सर. सर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस, द लोअर जुडिशरी इन द स्टेट civil court has a total number, sir, of the total number 2.36 lakh cases were pending in the Telangana High Court as on 30th September 2022, sir. I would like to know the total number of cases pending in subordinate courts, district courts and Telangana High Court as on now, sir. Sir, I request the government to ensure that the vacant post of magistrate, civil judges, other ranks of judicial officers are filled up in time-bound manner as to that these court function without any hassle and cases are disposed of expeditiously, sir. Sir, state legislature के बारे में मैं आपसे बोल चुका हूं सर, पूरे कमिटीज के लिए, and I hope that honorable minister साहब पूरे कमिटीज को बना देंगे सर. And going to the home department, sir, इसमें थोड़ा सा I'll just take a few minutes in this home department, sir. The demand for the grants for home department is rupees 10,188 crores in the next year's budget. So the home department, in fact, comprises several departments, including Director General of Police, Prisons, Printing and Stationery, State Disaster Response and Fire Services, Sainik Welfare, different wing of police departments such as Police Academy, Police Commissionerate of Hyderabad, Cyberabad, Ratchakonda, Intelligence, Home Guard, Special Protection Force, Greyhounds, Octopus, Police Academy, or Civil Defense Organization, Telangana Integrated Command Control Center, Telangana Cyber Security Bureau and Telangana Anti-Narcotic Bureau, sir. अब ये बिल्कुल कम वक्त में बोलने के लिए बोले हैं सर, मुसलसल बोल रहा हूं सर 15 महीने से. वो निजाम पुलिस एक यूनिट है सर, उनके बारे में उम्मीद करता हूं कि हुकूमत और होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के साथ में है, वो पोर्टफोलियो उनके पास है. जब मिनिस्टर साहब जवाब देंगे तो उसके ताल्लुक से भी कुछ बोलेंगे सर. Sir, it is 16 months that the Congress has came to power, sir. When the Congress came to power in December 2023, the government asserted that it would ensure law and order, public safety and crime prevention. However, the crime data for the year 2024 calendar year released by the DGP as well as Commissioner of Hyderabad, Cyberabad, Ratchakonda and Cyber Security Bureau and Anti-Narcotic Bureau shows that there is a spurt in crimes in general and in cyber crimes in particular, sir. Sir, I have all the details, sir. All the details, sir. Overall crime in Telangana jumped by 22.53% from 1,38,312 cases in 2023 to 1,69,477 cases in 24, a net increase of 31,165 cases according to the annual report, sir.
This is not again my figure, sir. Telangana recorded 19,922 cases of crime against women in 2024, a 4.8% increase from 19,013 in 2023, sir. Cyber crimes have surged dramatically, sir, with 25,184 cases reported in 2024 as against 17,571 cases in the year 2023, sir. Telangana saw consistent growth in cognizable offense over the past few years. In 2020, 1,19,863 cases were reported, which increased to 1,25,479 in 2021, 1,31,988 in 2022. The number further climbed to 1,38,312 in 2023 before peaking at 1,69,477 in 2024. This is 22.5% rise compared to 2023, sir. The highlights both increased reporting and rise in crime such as cyber fraud, theft and crime against women also, sir. Sir, when I say the crime is increasing, sir, one important thing which I want to raise is that, sir, कि पुलिस स्टेशन ये क्रिमिनल्स को नहीं देखते हैं, सर, और क्योंकि इनको मालूम है कि कौन क्रिमिनल्स है, क्या है. So the crime is increasing because most of the police stations are busy with land dealings and solving land disputes and clearing all land issues, sir. ये इस वजह से ऐसा हो गया है, सर. पुलिस स्टेशन में पब्लिक का काम नहीं हो रहा है, वुमेन के ऊपर जुल्म के ऊपर नहीं हो रहा है, किडनैपिंग पे नहीं हो रहा है, चोरी पे नहीं हो रहा है. पुलिस स्टेशन में अगर कुछ होता है, सर, लैंड डीलिंग, बस. Sir, I am telling this with all responsibility, sir. The reason is that, sir, in my constituency, sir, the police stations are, dealing this. सर, एक जमीन बेच के चले गए, सर. एक गरीब बल्लागोड़ा एरिया में, सर, जमीन खरीद लिया. He had money only to purchase the land. तो वो अपने पैसों से बाउंड्री वॉल उठा लिया, सर. And sir, somebody comes with some court order, लेके आ गया, सर. 10 साल की बाउंड्री वॉल में घुस के तोड़ के अंदर घुस गए. पुलिस जा रही है, कुछ नहीं कर रही रोडीज को, सर, लैंड ग्रैबर्स को छोड़ दिए, सर, छोड़ दिए, सर. एंड व्हाट हैपेंस, सर, एक गरीब अपनी मेहनत से अपना प्लॉट लेता है, कोई सम कोर्ट ऑर्डर बोल के लेकर आते. आई हैड टू कॉल अप टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, सर, फॉर विच मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि जैसे मैं कमिश्नर साहब को बोला हूं, साहब के ये पुलिस स्टेशन में लैंड डीलिंग्स के तस्वीर हो रहे, मसाइल हल हो रहे और पूरा हो रहा. कमिश्नर पुलिस कॉल द डीसीपी, एसीपी, सर्कल, गेव देम द वार्निंग, सर. और गरीब औरतों का, गरीब लोगों के पोजीशन पुलिस ठहर के लैंड ग्रैबर्स को दिला रही है. फिर कमिश्नर साहब सीवी आनंद साहब बोले नहीं, वापस दियो पोजीशन, वापस दे दिए, सर. फिर पुलिस वाले खामोश. सर, दिस इज व्हाई द क्राइम इज इंक्रीजिंग, सर. अब आप ट्रैफिक में देखिए, सर, व्हाट इज द रूल पोजीशन, व्हाट इज द रूल पोजीशन, सर. द ट्रैफिक पुलिस इज सपोज्ड टू मॉनिटर द ट्रैफिक, रेगुलेट द ट्रैफिक. द रूल पोजीशन सेज दैट कि डू दे हैव द राइट टू इशू चालान्स, डू दे हैव द राइट टू गिव फाइन्स? नो, सर, नो, दे डू नॉट हैव. लेकिन क्या करते हैं, सर, कोने में ठहरे हुए, खाली फोटो लेना. इफ्तार के टाइम पे जा रहे, चिक फोटो ले लो, डाल दो, फाइन. और वो पैसा कहां जा रहा, सर? गवर्नमेंट ट्रेजरी. गवर्नमेंट ट्रेजरी. एटलीस्ट चलो वो पैसा चालान से जो आ रहा है वो आप ट्रैफिक को अच्छा करिए, सिग्नल्स लगाइए. नहीं, सर, सर, इन राइट फ्रॉम ओवैसी हॉस्पिटल जंक्शन, बल्लागोड़ा, आरामगढ़, सर. अब आप बोलेंगे, सर, दिस हाउस वुड बी सरप्राइज व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ लेजिस्लेचर, सर. आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर कि सिग्नल्स दे दो, सर, ये रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. नोबडी इज बॉदर्ड टू गिव सिग्नल, सर. व्हाई? ओल्ड सिटी है, भाई, मुसलमान रहते हैं, भाई, वहां पे सिग्नल रहने दो, नहीं रहने दो, कुछ नहीं होता है. हाईटेक सिटी में सिग्नल होना, फ्लाईओवर होना, अंडरपास होना, लाइट होना, सर, द गवर्नमेंट कैनॉट प्रोवाइड सम फ्यू सिग्नल, सर. आप बताइए ट्रैफिक का क्या आलम है, सर. ट्रैफिक जहां जाओ कंजेशन है, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं, खाली बातें बातें बातें, सर. बस आ गई है तबीयत बातें सुनते सुनते. अरे हम काम चाह रहे हैं, कब काम होगा नहीं मालूम, सर. सर, क्या कैमरा, सीसी कैमरास लगा दिए, कहां चल रहे, सर?
सर मैं बोलता हूं, एक मिनट। सर आपकी बात बिल्कुल सही है सर, 10 साल से उन्होंने नहीं करे, इस वास्ते यहां आए। अब आप यहां आना चाह रहे ना, नहीं आएंगे आप, तो मैं आपको करो बोल रहा हूं सर, वो नहीं करे, आपको करो बोल रहा हूं, गुस्से में क्यों आ रहे हैं आप बोलिए 10 साल वो नहीं करें अकबर साहब, हम करेंगे, बोलिए आप। अब sir, yesterday my learned friend rose up and said it is only 15 months that we have come to power. 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता सर। अरे कैसा सर, आप बोलिए अभी कितने दिन होना है आपको, कितने दिन होना है अभी, और 15 महीने होना है क्या? कैसा सर? Sir, with all my humility, sir, I would like to tell my learned friend who can twist words, who can put words, who... No, I'm telling you. Because, sir, when my learned other friend, Mr. Akbaruddin Owaisi sir, was speaking, you know, very intelligent MLA, sir, ex-minister. He was just trying to prick some issue of video CC camera, sir. They were there for 10 years, sir. Yes, 15 months. We are setting things right. You know, सही बोले 9 महीने में पैदा हो सकता बच्चा, मगर sir, for few people, you know, to set right the things which has been done by the earlier government. Our government is taking time to make few things undone first. Then we'll think of having a plan of having a baby or in mines and all. No, sir, not at all. And my point, sir, my point to Akbar Sahab bhi, regarding the law and order situation here. Just now, our Honorable Chief Minister has explained the situation of law and order. I would like to request Akbar Sahab ko, if there are any issues in regarding to any police officer who is going against rules and regulations of the law enforcement agencies, definitely we are here to take action against those people if they are going overboard their job responsibilities, Adhyaksha. Akbar ji. Honorable panel speaker, sir, I thank you, through you I thank the Minister Saab for replying, sir. सर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी क्या है, जैनूर का फिसाद आपके सामने है, किसी को जाने नहीं दिए, सोशल बायकॉट हो रहा है, मस्जिद पे क्या हुआ है आपके सामने है, शमशाबाद की मस्जिद 1 मस्जिद 2 मस्जिद 3 मस्जिद आपके सामने है, सिकंदराबाद की मंदिर में जाके मूर्ति को तोड़ा गया, ये भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्या है आपके सामने है। फिर चंद्रायन गुट्टे में भी एक मंदिर में हमला हुआ, वो भी आपके सामने है। गेरुआ कपड़े में एक रोजेदार गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेके जा रहा है, गवर्नमेंट के फाइल उसको मारा गया निजामाबाद में, लॉ एंड ऑर्डर का ये सिचुएशन भी आपके सामने है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, सर इसमें भी 4.8% हैव बीन इंक्रीज, सर। अब आप बोलेंगे कैसे हुआ, सर दीज आर नॉट माई फिगर्स, सर। The state recorded 19,922 cases of crime against women in 2024, showing 4.8% increase from 19,013 in 2023. Rape cases surged to 2,945, a sharp of 28.94% rise compared to the previous year, sir. Rape ka. And these are not my figures, sir. 28.94%, sir. आप बताइए, सर। सो अब आप बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, जयनूर का फिसाद लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, मार रहे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, मस्जिदों को गिरा रहे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, मंदिरों में मूर्तियों को डैमेज कर रहे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। कहां से अच्छा है, सर? वेयर इज इट, सर? आई टेल यू वन थिंग, सर आई एम ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मगर पुलिस वाले जो बोलना, सर पुलिस वालों की भी हिम्मत की दाद देना, सर यू नो सर, रिसेंटली सम फ्यू पुलिस ऑफिशियल्स केम टू मी, आके मेरे को बोले अकबर साहब ये पुलिस स्टेशन बनाना है साहब। मैं हाँ बनाइए, अच्छा है, लैंड आ गया। तो उसके बाद में पुलिस वाले मेरे को बोल रहे हैं अकबर साहब जरा आप कुछ पैसे दीजिए। तो मैं उनको पलट के बोला कि वो आपको कहां से मामूल आ रहा है ना, वो मामूल अपने घर में अपने जेब में मत डालो, उससे पुलिस स्टेशन बना लो, बन जाता।
हमसे पूछते हैं, हम 50,000 बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं सर। सिर्फ करप्शन है सर, पुलिस तो ऐसी है सर, कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्या है नहीं मालूम सर। इस वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है। एंड दे कम एंड दे आस्क अस, नहीं अकबर साहब पुलिस स्टेशन बनाना आप दो, इनको मामूल नहीं मिल रहा सर। डोंट दे नो हु आर द एरिया रॉबर्स? दे नो सर। Don't they know who are the ganjatis? They know sir. Don't they know where the ganja comes? They know sir. Don't they know where the brown sugar comes? Yes they know. Don't they know that where the drugs comes? They know sir. Don't they know where is the duplication of ये बहुत सारी चीजें हो रही है, इनको मालूम, सब मालूम रहती साहब, लेकिन ये है कि सबसे इनको मामूल आता है, इसलिए खामोश रहते हैं और तवज्जो नहीं है। देखिए सर 28.94 rapes have increased. I am going to say on this, sir. Cyber crime surged dramatically, sir. Then Telangana during 2024, as per the Telangana Cyber Security Bureau, sir, TGCSB 25,184 cases has been reported in 2024, as against 17,571 cases in 2023, a jump of 43.33%, sir. And then TGCBC refunded itne paise, they give a figure, we refunded 180 crore, 247 crore put on hold. Arey sir, wo सब है sir. But sir, crime sees I would say the 2,150% jump in refund. The sharpest jump in cases were recorded by the State Cyber Security Bureau, sir, by 43.33%. The total amount refunded to the victims in 2024 stood at rupees 180 crores. This is a 2,150% increase from rupees 8 crores refunded in 2023, sir. Sir, NDPS Act cases, sir. Efforts to combat drug trafficking and abuse intensifies in 2024 with 1,950 cases registered under the NDPS Act, a rise from 1,360 cases in 2023. The Telangana Anti-Narcotic Bureau seized drugs worth 142.95 crores and arrested 4,682 people. In addition to seizing large quantities of ganja, heroin and synthetic drugs, the Bureau obtained freezing orders of properties worth 55.8 crores from offenders involving in 10 major cases, sir. Sir, and also road safety, the state recorded 20,702 road accidents, showing a slight reduction from 23,000